Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। अगले आधे घंटे में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे। कार्यक्रम में आपका स्वागत। उद्यन, धन्यवाद। थैंक यू राजेश। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। India to become one of the top 5 shipbuilding nations in the world, says PM in Global Maritime India Summit. Infrastructure development is the most important agenda for the government, says Nitin Gadkari in CRISIL Infrastructure Conclave. And key domestic share indices today ended higher, with Nifty above 19,800 amid buying across the sectors, and Sensex ended above the 66,400 mark. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट से निपटने में जुटे विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है और वो दिन भी दूर नहीं जब भारत विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में आर्थिक गलियारे के संबंध में निर्णय भारत की पहल के कारण लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे माल ढुलाई के खर्च में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में विश्व के 5 सबसे बड़े पोत निर्माता देशों में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कहा कि भारत समुद्री क्षेत्रों के विकास के जरिए विश्व भर के पोत निर्माताओं को एक साथ लाने के एकीकृत दृष्टिकोण पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारत की क्षमता का सबूत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रेटिंग में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नीली समुद्री अर्थव्यवस्था की रूपरेखा के तौर पर अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। उद्यन रे, सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं कि आर्थिक संकट से जहां जूझ रहे हैं पूरी दुनिया के देश, ज़्यादातर देश, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान दर को 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया 2023-24 के लिए, क्या आप भारत निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बाजार है निवेशकों के लिए भी पूरी दुनिया के, और एक निवेश जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन के, गंतव्य के तौर पर भी देखा जाता है। इसके अलावा और क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित विशेषताएं देखते हैं जो कि अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी की ओर जा रही है, जबकि विश्व के और देशों की अर्थव्यवस्था हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छे उनके प्रदर्शन नहीं है? देखिए क्या होता है कि हमारा, जो कि आपने कहा कि साइज इतना है, कई लोग मेरे जैसे लोग उसको कॉन्टिनेंटल साइज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। एक महाद्वीप का जो साइज होता है तकरीबन, वैसे तो उप महाद्वीप कहा जाता है, पर इकोनॉमी लोग इतने हैं कि वो एक कॉन्टिनेंट के बराबर। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और कई और महाद्वीप हैं, उनसे तो ज़्यादा ही आबादी भारत में। तो जब इतने लोग होते हैं तो फिर आपके पास वो इंडस्ट्रीज़ आपको लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके मार्केट बाज़ार के पास होना चाहिए, उत्पादन या सर्विस सेवाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें
आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, और जब आर्थिक प्रगति होती है तो इन चीज़ों की मांग भी बढ़ती चली जाती है। आप सोच सकते थे कि अच्छा 10 साल पहले भी क्या हम सोच सकते थे कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए निजी इतने उपक्रम होंगे? सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या हम आज से 3-4 साल पहले सोच सकते थे कि भारत में ड्रोन बनाने की जो क्षमता से जुड़ी हुई जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो इतने सारे हो जाएंगे? तो कई बार क्या होता है, इसको ज़ीरो, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं लाल बत्ती पे तो कहते हैं 0 to 100, तो हमारे देश में कई बार 0 to 100 होने में बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है। और जो फेज़ कई जगह में जो एक युग में तय किया जाता है वो हम कुछ सालों में करते हैं। आप देखिए कैसे डिजिटल पेमेंट्स जो हमने मोबाइल फ़ोन से हम दूसरों को भुगतान करते हैं वो कितनी जल्दी से हुआ। आज से अगर 10 साल पहले सोचें कितने लोग ही करते थे, और आज देखिए कितनी ज़बरदस्त उसकी पहुंच हो गई। तो कई बार क्या होता है कि ये जो मूलभूत चीज़ें हैं वो अपनी साइज़ के वजह से आ जाती हैं। अपने साइज़ के वजह से दूसरी दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आपको उस हिसाब से जो आकार जितना बड़ा होगा तो चैलेंज का आकार भी उतना उस हिसाब से होगा, और उतनी आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है जितना आप सॉल्व करते हैं। तो जहाँ तक 6.3% का सवाल है, उससे तो हम भारत का काम होने वाला है नहीं, क्योंकि आप हमें याद रखना पड़ेगा कि 140 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पे हम जो हैं 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, तुलना कीजिए, चीन जो है उसके पास भी तकरीबन हमारी जितनी आबादियाँ, हमने उनको पीछे पछाड़ के अप्रैल में हम आगे बढ़े हैं, पर उनकी जो अर्थव्यवस्था का जो साइज़ है वो हमसे 6 गुना है। इसका मतलब अगर उनको जो अगर केक है और हर भारतीय में बांटना है तो उनके पास जो केक है वो 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे लिए क्या लक्ष्य है, क्या हमारे लिए होमवर्क है, वो तो क्लियर है, और इससे कोई कतरा भी नहीं रहा। पर उपलब्धि जो हमने अब तक की है वो सराहनीय है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं। हम सबकी बात सुन के, सबकी बातें जान के, अपने पीछे को अपने साथ लेके, हमारे हिस्ट्री को साथ में लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका है। ऐसा नहीं कि 4 कदम एकदम से बढ़ गए और फिर 5 कदम पीछे हो गए। तो एक दिशा जो है, एक ठहराव, मतलब एक सीरियसनेस के साथ, एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती हैं। Then coming back to the Global Maritime Summit, where the Prime Minister talked about the economic corridor of India, Middle East and Europe, and how it's going to become historic and something that's going to revolutionize the regional and global trade. What are the benefits, of course? How is it going to revolutionize? And also, he also mentioned that this economic corridor was decision on this corridor was taken during the G20 Leaders Summit. So, how many people, how many continents? I mean, of course, it is at the moment India, Middle East and Europe, and it's going to be a relationship between all these countries put together which will work towards the regional and global trade. So would you throw some light on this economic corridor and as to how it's going to progress going forward? So, Rajesh, I'll split the answer, the brief answer, in 2 parts. One is the strategic global scenario in the global context, and the first part is the obvious part. How is it going to benefit us when we are going to? It's going to bring Europe nearer to us. So European Union is one of the largest export markets for us, and we import a lot of stuff from them. So it's going to crunch the time, it's going to crunch the cost. But Rajesh, having said that, this is going to take some time. This will take some doing. You're talking about rail. It's going to be a multimodal kind of a thing. And when you're going to crunch time and cost, then you become more competitive. Importing it is, if you're managing to do it quicker, that means it's going to take you less cost, and therefore the markets become nearer. Suddenly, geography stops
stops playing an impediment. So that is number one. So it brings that The continent is going to come closer to and us. in between, what's going to happen? The reason why Middle East, all the Gulf and other countries are interested is because whenever you build these corridors, what happens on both sides, there's a lot of, so if this rail is going to happen, then there's going to be a lot of other development that's going to happen. Sometimes corridors can get linked with other corridors. So what happens is in that whole area, if you link somehow link them up, then what happens? Even the between the two corridors, development happens. So that's number one. That's the obvious. It's not as if this is the first corridor. We have Russia, Azerbaijan, and Iran. There's a I don't know. I think it's called the North-South corridor. So that was also that's also there. It's still in the works, and that would obviously bring that side of Europe or whatever you call it to us. But then, as the name of the country suggests, there are practical challenges. So that's the second corridor, which is again very important. But the various players are looking at it for a different. Where from the Chabahar port you get it. So that's quickly the two corridors. Now, if you look at it at the geopolitical level or geostrategic level, China has got so many of these corridors. It's insane the number of how far ahead they've moved. So they've basically taken some corridors that are cutting across Central Asia, going towards Europe, and Turkey is involved in some of them. So when you have cooperation and you have competition. So when you are going to compete with a certain country and also cooperate, then cooperation piece is fine. But if you think that eventually you're going to end up competing on some spaces, then you also need to have those corridors. So it is very important that these corridors you have the Belt and Road Initiative. That's another sort of corridor you have. But in India's context, Make in India, Make for the World comes into play quite strongly over here. Yeah, that is why, Rajesh, even if you make it, you have to make sure that it reaches the market in a good shape and a good time and quickly. So what happens, Rajesh, as we all know, product cycles, demand cycles change very quickly. So if you take a very long circuitous route, if you take 2 months to send your stuff to your destination, there might be a change, economic change, which we saw in the pandemic. Suddenly there is no demand or there's lots of demand. So but then since you said countries are going to come closer to India, so that is exactly what's going to happen. You make sure that from the time you manufacture something or produce something to the time you realize the money, there isn't too much of a gap. So what that does is it frees up your cash flows. It makes the whole process so much more efficient, and you are able to respond to changes in market conditions or demand on a real-time basis. The Prime Minister also said about the integrated approach to bring together the shipbuilders, which will help hasten what you are saying. Absolutely, Rajesh. Again, most of the international trade is done by sea. So that's very important. Now, China is, I'm really sorry, I have to get back to China again, is the number 2 economy in the world, but they are the largest shipbuilding country in the world. So which clearly indicates that if you are going to produce stuff, then you must not only have those roads and the pathways, but you have to build these vehicles, ships, which will very quickly take them. I understand what you're saying. If you could throw some light on the Amrit Kal Vision 2047. Well, the idea is our aspiration is to be a developed country by then, and if we are number 3, we'll obviously be developed. But to do that, everything from the point you produce something, first you have to build a capacity to produce, then you have to transport it, and then make sure that you realize quickly. So the whole pathway has to be so smooth. And it has to be geared up for growth. So you cannot have these clogged ports, clogged roads to the ports. So all these things will have to be done so that you're ready for the big bang. Yeah, it's going to be the blueprint for the Indian maritime blue economy.
Moving on, the Union Minister Nitin Gadkari today said that infrastructure development is most important agenda for the government. Addressing the 4th edition of CRISIL Infrastructure Conclave in New Delhi, he said more export and industries are required to fulfill the dream of Prime Minister Narendra Modi of making a $5 trillion economy. He stressed that without world-class infrastructure, agriculture and industry cannot be developed. Mr. Gadkari said presently the logistics cost is 14 to 16% and government's mission is to make this logistics cost less than 9 to 10% after the end of 2024. He said government is making lot of green express highways and different alternative fuels are used. He stressed that innovation and research is important in order to do this. More export and industries required to fulfill the Prime Minister's dream. Would you elaborate on that? Well, Rajesh, if you're going to produce for India, you're going to produce at a very large scale. And automatically, if you're doing it, if you align yourself with global standards, then it's automatically you'll be producing for the world. So we have seen how our pharma companies are producing. We're called the pharmacies of the world. There's so much of export of our auto industry finished products and components. So it's not as if we have not been doing it, but when you want to really go big time, then yes, your domestic economy is going to help. But if you want to build in a have the benefit of a global scale, then you obviously will have to look at international markets and be able to compete with them. And of course, logistics becomes important, because if it adds so much of cost, then obviously when you're competing on price, etc., you will be at a disadvantage. So that has to get evened out, which the Honorable Prime Minister is talking about. जी, केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि बिना एक वैश्विक स्तर के, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के जो है इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती. जब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, उसके डेवलपमेंट की बात आती है, तो सरकार की ओर से तो काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है. आपको लगता है कि निजी क्षेत्र की भी भागीदारी इस बुनियादी ढांचे के विकास में बढ़नी चाहिए? देखिए, बात तो पते की आप कर रहे हैं, पर सरकार के पास जो मसल रहता है ना, जो इसमें ये देखिए ना, बुनियादी जब आप निवेश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है, और उसके जो रिटर्न है कि पैसे की वापसी जो होती है, उसको होने में देरी होती है. अब ये तो सोचें कि कितने कंपनीज हैं इंडिया में, निजी उपक्रम हैं, जिनके पास वो मसल है ऐसे, पर धीरे धीरे करके ये बढ़ेगा. और कई बार क्या होता है कि कई बार कंपनी की जो है वो उतनी बड़ी साइज़ की ज़रूरत नहीं है, पर आपके पास जो फाइनेंशियल मार्केट्स वो अगर बेहतर हैं, बाहर से जो फंड्स आ रहे हैं वो बेहतर हो जाते हैं. मैं डेट रिलेटेड मनी के बारे में कर रहा हूँ, इक्विटी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फाइनेंसिंग होती है वो डेट फाइनेंसिंग होती है. तो अगर आपके डेट मार्केट्स या डेट का जो माहौल है वो अगर कंड्यूसिव हो जाता है, आपके पास वो स्किल्स हैं, वो समझ है कि कैसे फाइनेंसिंग रेज किया जाए और प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसी स्किल्स हैं हमारे पास, तो तब आपके प्राइवेट सेक्टर का भी होता है. पर इस केस में पहल तो सरकार को करनी पड़ती है. Infrastructure as a sector not only is good for the country or for sectors, as Vishal said, about agriculture and industry, but even from the investment point of view, even in the markets that you and I deal in, infrastructure is one sector which which holds quite a promise, and one should invest in that. Absolutely. It's just that, Rajesh, not every private sector player has that size. As I mentioned, you have to take loans or debt for a slightly longer period, and you have to be very sure that you will get the money back. Otherwise, you'll get into the kind of problems banks did in the last 10-15 years. जी, रुक करते हैं शेयर बाजारों का. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज चौतरफा लिवाली के बीच बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,400, जबकि
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,800 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच इन दोनों सूचकांकों में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 261 अंक के उछाल से 66,428 पर बंद हुआ और निफ्टी 85 अंक की वृद्धि से 19,817 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% लाभ के साथ बंद हुए। The key domestic share indices today ended higher, with Nifty above 19,800 amid buying across the sectors. The BSE Sensex ended above the 66,400 mark, while the NSE Nifty closed above 19,800 level. Both stocks appreciated amid positive cues from global share markets. The Sensex gained 261 points to finish at 66,428 and the Nifty added 85 points to settle at 19,817. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.4% and the small-cap index rose 0.7%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 companies appreciated while 8 companies declined. Power Grid climbed 1.9%, Kotak Bank gained 1.2% and Tech Mahindra rose 1.1%. On the other hand, Tata Motors declined 1.5%, L&T fell 1.1% and IndusInd Bank slipped 0.7%. In sectoral indices at the BSE, among 20 sectors, 18 logged gains while 20 reported loss. Utilities sector surged 1.2%, power sector and energy sector both gained 0.9% each, whereas capital goods sector fell 0.1% and realty sector lost 0.02%. The overall market breadth was positive as shares of 2,188 companies gained, while those of 1,502 companies declined. A total of 135 shares remained unchanged. और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 रुपए 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.33 पर कारोबार कर रहा था। उस दिन शेयर बाजार की बात करें तो 3 दिन का जो एक गिरावट का जो हम देख रहे थे, उसके बाद आज बाज़ारों ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है। लिवाली आज हम देख रहे हैं बाज़ार में। क्या प्रमुख कारण आप मान रहे हैं, वजह मान रहे हैं इसके पीछे? ये एक मैं इसको शॉर्ट टर्म मूवमेंट ही मानूंगा। और जैसे आपने कहा पीछे का जो ट्रेंड चला था उसके कई बार आप बाजार आकलन करके दोबारा रिवर्स कर जाती हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिजल्ट्स निकलेंगे कंपनियों के, चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, वहाँ पे भी रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, तो ये काफ़ी कुछ आपके बाज़ार का जो डायरेक्शन है उसको वो डिटर्मिन करेगा। आगे एक अच्छी बात ये भी है कि जो रेजिलियंस, जो एक स्ट्रेंथ वो हमने दिखाया है, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाया। मुद्रास्फीति के जो पीछे के जो फिगर्स आए हैं वो थोड़े से उत्साहजनक हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। इसके अलावा जो है ये त्योहारों का सीज़न है, तो कंपनियां जो हैं वो एक मांग में उछाल की तरफ देख रही हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपनी जगह हैं, पर डाउन साइड ये है कि आपके स्पेशली इजराइल, फ़िलिस्तीन और रशिया यूक्रेन में जो संघर्ष है, स्पेशली इजराइल फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है, वो अगर स्प्रेड होता हुआ नज़र आया तो तब बाजार में एक नर्वसनेस की आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि लोग तेल के दाम के बारे में या तेल की सप्लाई के बारे में, आपूर्ति के बारे में सोचेंगे। So then what you're saying is that the market gap up opening indicates an optimism over the ongoing Q2 earnings, despite though you're saying that it may later have some repercussions, but you're talking about the concerns in the Middle East and subdued start by IT sector. All these indicated towards the rally that we observed in the market today. बात करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज सभी एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। जापान के निक्केई में 1.1% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी
0.9% की बढ़त के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% की तेजी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुए। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिलाजुला रुख रहा। उड्डयन और रक्षा क्षेत्र के शेयरों में तेजी के कारण लंदन का FTSE 100 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। हालांकि फ्रांस का CAC 40 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.1% की गिरावट में चल रहे थे। Major U.S. stock indices ended sharply higher on Monday as investors were optimistic about the start of earnings season, while transportation and small cap shares also jumped. Market participants were monitoring the Israeli war in Gaza but appeared to be taking more of a risk-on stance on Monday, with safe haven gold prices down. The Nasdaq Composite Index climbed 1.2% and the S&P 500 rose 1%. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. Very quickly, Udayan, Israel is being supported by US, and if war happens, what repercussions that will have, or if the status quo remains the way today it is as of now, then how will it affect rest of the world, including India? Well, basically the markets will be looking at the oil supply and oil prices. If that is not an issue, then the markets will be more or less okay. There will be imports or materials like potash and all that, which I believe come from supplies that come absolutely from Israel, and they form a significant part of global supply. That those may affect in pockets, but this is what they're going to look at. The moment they see a problem in oil supply, you can expect the markets to be nervous. But everyone was looking at US to ease sanctions on Venezuela and their oil. There is a discussion, and there are reports that they might be moving in for some kind of an understanding. It's a politico-economic understanding that a deal that's coming up, and that's a lot of oil that's getting freed up. Because India has been constantly complaining that oil sources have been messed up with, and India has been taking the name of Venezuela and Iran. Iran is very near for us, so that has been a challenge, and that has really messed up the supply scene. So we will be tilting more towards Russia for oil supplies? It pretty much depends, Rajesh. Depends on what's being offered, and I think the idea is to go to the market as far as India is concerned and get the best deal whoever gives it. Okay. In intraday trade today, Brent crude was trading at $89.72 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $86.85 per barrel when reports last came in. How much of escalation in price are you looking at? It varies from day to day, Rajesh. And if, as I mentioned, if things escalate out there in Middle East, then there could be a little bit of a bother. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना आज गिरावट के साथ 59,146 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिसंबर अनुबंध वाली चांदी की वायदा कीमतें 69 रुपए टूटकर 70,968 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थीं। उद्यन, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Dan, for being with us. And before we close, the headlines once again. India to become one of the top 5 shipbuilding nations in the world, says Prime Minister in Global Maritime India Summit. Infrastructure development is most important agenda for the government, says Nitin Gadkari in CRISIL Infrastructure Conclave. And key domestic share indices today ended higher, with Nifty above 19,800 amid buying across the sectors. Sensex ended above 66,400 mark. जी, और इसी के साथ अब समय हो रहा है, कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मार्केट मंत्र उद्यन, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And we will be with you same time, same frequency tomorrow. Till then, goodbye. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market.
This is Akashvani, the news read by Niharika Bhuvania. Prime Minister Narendra Modi today chaired a high-level meeting to assess the progress of Gaganyaan mission, the country's first human spaceflight mission, and to chart the future course of the country's space exploration. During the meeting, the Prime Minister asked scientists to aim for new and ambitious goals for the country in space exploration. He called upon scientists to aim for setting up of an Indian space station by 2035 and sending the first Indian to the moon by 2040. To realize this vision, the Department of Space will develop a roadmap for moon exploration. This will encompass a series of Chandrayaan missions